Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay. We have started with our physics chapter, that is work and energy. So in our previous video, we have already done whatever information has been given to you regarding work. So we have completed with the definition of work. Then we have learned about the displacement, about our force that is acting on the object. We have seen various activities as well. Also, we have learnt about various examples which we have gone through for the definition of your work done. We have also seen the expression that should be written if the work done by an object which is placed on an inclined plane. Then we have also seen the positive work done, the negative work done, and zero work done. We have also completed with the various units of work, that is as per your SI unit, the unit of work done is joule, and as in CGS system, you have the unit of work as erg. So how we can have the relationship between the joule and erg, that also we have seen in our previous video. We have also seen the activities where from we can just have a concept of positive work done and the negative work done, as well as the zero work done. So today we will start with our next concept, that is energy. So on your page number 22, you have got the next topic, that is energy. Now in this topic, we will learn the definition of energy. Then we will also learn about the various forms of energy. Then how the energy can be transformed from one form to another form. So one by one, we will see the concepts. Now you have in your textbook these examples. In this you can see that if a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. Okay, languishes means the plant will not grow properly. So from this statement you can know that some energy is working on the plant so that the plant, there is a good growth of the plant, isn't it? Then your second example is on increasing the volume of a music system or TV beyond the limit, the vessels in the house start vibrating. That means something is happening when we increase the volume of music system, and thus the house starts vibrating. Again, you have the third example, that collecting sunlight on a paper with the help of convex lens burns the paper. Now you know that convex lens is the lens which can uh, accumulate all the lights, that is the heat and light of the sun in one point, and that will burn the paper. So from this example you can see that something is there which helps the different activity to go on, isn't it? So this something is nothing but your energy. So your definition of energy is the capacity of a body to perform work is called energy. So we have already learned about work. Work means an object should be displaced, isn't it? When some force is applied on it, and energy is nothing but the capacity of the body to perform work. How much that body has performed work, that capacity is called as the
energy. Okay, so energy, definition of energy is the capacity of a body to perform work. And as works unit is joule or erg. Likewise, the unit of energy is also the same. That is, in SI system, the unit of energy is joule, and in CG system, the unit of energy is erg. So, same as you have the unit of work, energy also have the same unit. Now, in our universe, in our nature, we have various forms of energy. So you have already learned about the various forms of energy in your earlier classes. So again, we will discuss something about this. So the various forms what you have already learned is about the mechanical energy that is produced through machines or through some objects. And then you have heat energy, light energy, sound energy, electromagnetic energy, chemical energy, nuclear energy, and solar energy. Okay, so these are the common forms of energy that you have already learned about, isn't it? So, heat energy, which burns, isn't it? Light energy, which gives you light, sound energy, which gives you sound, and then chemical energy are because of the chemicals that are present, electromagnetic because of electricity prone magnet, and then you have nuclear and solar energy. Okay, so these all energies you have already learned. Now, in this chapter, we are going to learn about the mechanical energy. इस चैप्टर में हम लोग जो एनर्जी का फॉर्म है वो है मैकेनिकल एनर्जी, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इसका एक छोटा सा नॉलेज हम इस चैप्टर में लेंगे. ओके, so mechanical energy is again differentiated into two forms, that is potential energy and kinetic energy. Now you can see that I have written in short about the definition of energy. Energy is capacity of body to perform work, and unit of energy, that is in SI system it is joule, and in CGS system it is erg. So unit of energy is same as the unit of work. So remember this. Okay, so these are the units of energy, that is joule or erg. Now you can see that I have written the various forms of energy. So they are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy, electromagnetic energy, nuclear energy, and solar energy. So all these forms of energy you have already learnt, or you have some knowledge of it in your previous class. So today we will learn about मैकेनिकल एनर्जी. तो हमने देखा है कि यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है. तो हम आज इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है, so in this chapter we will learn about the two forms of mechanical energy, that is kinetic energy and potential energy. So in this chapter we will just go for one by one uh, mechanical energy. Okay, so let us first start with kinetic energy. Now you can see that some of the examples are given in your book on page number 22. So here you can see that the first case is a fast cricket ball strikes the stumps. So here what happens? The ball which is in motion will strike the stumps. Okay. Next one is the striker hits a coin on the carom board.
So as we are putting force in striker, the striker will start moving and it will hit the coin on the carom board. So the striker will be in motion. Next one is one marble strikes another in a game of marbles. So whenever in the game of marble you want to strike the marble with one marble with the another marble. So the first marble which is in your hand will start moving as you want to strike it to another marble. So you can see that in all these cases, here in the first one, the ball is moving, then the striker is moving, then the first marble which is in your hand is moving. Okay, and as it is moving, it strikes the stump, then the coin, and then other marble, isn't it? In all these cases, that means the stump, the coin, and the um, another marble all are in stationary phase, and the object which is in motion strikes the other one. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉल एक मोशन में है और वो जाके जो स्टंप में वो हिट करता है। तो स्टंप क्या है, स्टंप एक जगह स्टेशनरी ही है और हम क्या करते हैं, बॉल को मोशन में लाते हैं एज वी थ्रो द बॉल, इजंट इट। और स्ट्राइकर में क्या होता है, स्ट्राइकर को हम स्ट्राइक करते हैं, फोर्स स्ट्राइकर में डालते हैं और वो जाके वो जो कॉइन रहता है, जो कैरम के ऊपर जो ब्लैक और वाइट कॉइन्स रहते हैं, उसको जाके वो स्ट्राइक करता है। दैट मीन्स कॉइन्स आर स्टेशनरी एंड स्ट्राइकर गो एंड हिट द कॉइन एंड फॉर दैट ओनली कॉइन मूव्स, इजंट इट। Similar way, in the third example, you have the marble. Two marbles are there. So as you hit other marble with the one that is in your hand, it will again strike the marble that is on the ground, and then it moves, isn't it? So all these are examples where a moving object strikes a स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी तीनों एग्जाम्पल दिया है वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्ट्राइक्स द स्टेशनरी, जो एक ही जगह पे रेस्ट पोजीशन में उसको जाके वो हिट करता है और देन ओनली द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, so in this case what you find that the moving object has some energy, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी है जो वो लेकर चलता है और जब वो जाके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक करता है तो वो अपना जो एनर्जी है उसको क्या करता है, उसको वो शेयर करता है विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड देन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ओके, सो अभी आप मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो एनर्जी पजेस्ड है वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और जो स्टेशनरी थिंग्स है जो कि रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट्स के जो एनर्जी है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज the energy which an object has because of its motion is called as kinetic energy। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है और उसमें जो एनर्जी होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट possess when it is in motion। जब भी कोई चीज मूविंग है, रनिंग है या hopping है, whatever is there, that object is having or that person is having the energy that is called as kinetic energy। Now you can see the kinetic energy is equal to work done on the object. So as the object is having kinetic energy, that is the energy that is gained because of motion, that energy will be shared to the stationary
ऑब्जेक्ट. सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है तो वही हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो F इंटू एस था. हम लोग ने वर्क पिछले वीडियो में देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो काइनेटिक एनर्जी इज द सेम थिंग, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू displacement. Can you see the formula over here? So here we can say that kinetic energy is equal to work done on the object, that is Ke is equal to F into S. Now we will learn about expression for kinetic energy. So इसका एक kinetic energy का एक यूनिक एक्सप्रेशन होता है जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये kinetic energy का फॉर्मूला है. सो वो एक्सप्रेशन हमें कैसे लाना है. सो काइनेटिक एनर्जी का एक जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज दैट वी वांट टू स्टडी फर्स्ट. Now, as you can see in your textbook, that is page number 23. So, as you have to find out the expression for kinetic energy, we will just derive it. Okay. So, हम लोग expression of kinetic energy हम लोग को लाने के लिए we have to just go for the quantities of the objects. Okay, so let us see here what they have written. Suppose a stationary object of mass m moves because of an applied force. Let u be its initial velocity. U is equal to 0. Let the applied force be F. This generates an acceleration in the object, and after time t, the velocity of the objects becomes equal to v. The displacement during this time is s, and the work done on the object is w is equal to f multiplied by s. Okay. Now, what do you mean by this paragraph? ये पैराग्राफ जो आपने अभी पढ़ा, ये इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए. एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सपोज यू हैव टेकन अ बॉल. आपने एक बॉल लिया, ठीक है. तो बॉल को आपने रेस्ट में पहले रखा, आपने एक जगह पे पोजीशन करके बॉल को रख दिया. अभी बॉल का जो मास है, मतलब वेट जो है वो क्या है, m. ठीक है. अब वेट तो m हो गया. उसके बाद अभी क्या हो रहा है, नाउ यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स. अभी क्या करेंगे, बॉल को एक फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे. सो दैट फोर्स इज F. ओके. So as soon as you apply the force F, you will see that the ball will start moving. Okay. So as it starts moving, it will show you acceleration. Acceleration का मतलब क्या हो गया, change in velocity. Velocity क्या हो गया, displacement upon time. Velocity मतलब it is nothing but equal to what, your speed, isn't it? So this generates an acceleration, and after time t, the velocity of the object becomes equal to v. The displacement during this time is s. The work done on object is w is equal to f into s. So मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ कि ये आप जो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसको वो कैसे है. ठीक है. नाउ सी, आई हैव ड्रॉन द बॉल. ठीक है, ये बॉल है और इसका मास क्या है, m है. ठीक है. नाउ इट इज इन विच पोजिशन, इट इज इन स्टेशनरी पोजिशन, एक ही जगह पे है. ठीक है, स्टेशनरी पोजिशन में है. नाउ व्हाट हैपेंस, आई एम पुटिंग और आई एम अप्लाइंग सम फोर्स. अभी मैंने एक इसमें फोर्स डाला है, इसको धक्का दिया है ना, इसको धक्का दिया है. सो दैट फोर्स इज F. ओके. नाउ एज यू नो दैट व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजिशन, इसका कोई भी मोशन नहीं था, इसका मूवमेंट नहीं था. ठीक है. सो m इज मास
एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उसका जो मोशन है वो इज इक्वल टू यू। यू मतलब इट इज़ नॉट इन मोशन, सो वेलोसिटी इज योर ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज़ीरो एंड दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब जब position of the ball was first position of the ball, okay, so when it is in stationary position that time its initial velocity was eu, okay। तो एक फोर्स मैंने अप्लाई किया है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस बॉल विल स्टार्ट रोलिंग, ये रोल होके अब आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये एक मूवमेंट हो गया इसका, है ना। तो फिर यहाँ पे जो ये इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज योर एस, okay, this displacement is your s, and now as it was moving, now the velocity is v, the final velocity, final velocity is v, मतलब यहाँ से ये जो पोजीशन है यहाँ से ये मूव होके आया है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी v, isn't it? So first, when it was at rest position, it was not moving at all, that is why the initial velocity, that is u, is 0। ठीक है, और अब यहाँ पे जैसे ही वो रोल होके आया है तो you can see that it has covered, it has displaced, isn't it? ये पोजीशन से ये पोजीशन में आ गया है when you have applied the force। So as you have applied the force, there is a displacement and there is the final velocity as your v, okay। Now what is the work done? Here the work done will be force into displacement. So whatever force you have applied and what is the distance it has covered up, okay, so work done is equal to force into displacement. Now from this formula we have to go for finding out the expression of kinetic energy। So हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तो है ही, और हमने देखा है काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी दैट इज possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो जैसे ही यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी था क्योंकि वो स्टेशनरी है, और जैसे ही मूवमेंट करना शुरू किया तो उसमें जो एनर्जी है वो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यही जो मोशन में जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है, ओके। सो वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन हाउ यू कैन go for the kinetic energy calculations, okay। So let us now see, because all these terms are already understood, isn't it? Mass मतलब इसका जो weight है, force is f, displacement is s, then initial velocity was u and your final is v। So we have the formula for work done, that is w is equal to f into s। So now in your previous chapter, that is chapter number 1, you have already learnt about Newton's law of motion. So we will follow the Newton's second law of motion, which gives you that force is equal to ma, isn't it? Mass into acceleration. So we will use this formula. So we will use the formula, that is F is equal to ma. Now in your previous chapter, you have also learnt about the equations of motion। आपने equation of motion के बारे में भी आपके first chapter में पढ़ा है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा है। फर्स्ट वाला था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा था आपने। फिर सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ा था। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, this is the relationship between displacement and time, and then your third equation was v square is equal to u square plus 2as। this is also the relationship between displacement and velocity। so आपने ये जो equation of motion था, ये तीनों क्या है आपका, equation of
मोशन, ये आपने पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, सो हियर वी विल यूज दिस इक्वेशंस. ओके, यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हम ये इक्वेशंस का यूज करेंगे. सो here you can use the second equation, that is S is equal to ut plus half at square. क्यों ये हम यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैंने जो आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया था उसमें आपका क्या था, आपका u था, है ना, इनिशियल वेलोसिटी था, आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, then you had the time as well. So we are using this formula. Okay, the second formula. Now see, I have written the second formula. S is equal to ut plus half at square. So I have already told you about the three equation. मैंने आपको लिख के दिया था रेड पेन से अभी, इक्वेशन ऑफ मोशन. तो उसमें से जो सेकेंड वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, सो we have to just put the values in the equation, okay, according to the information that has been given in your paragraph. तो हमने जो पहले जो पैराग्राफ रीड किया था उसमें क्या था, मास m लिया था हमने, फोर्स f लिया था, डिस्प्लेसमेंट s लिया था, देन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 लिया था, है ना. सो दैट थिंग यू हैव टू पुट अप इन दिस फॉर्मूला. So here you can see that S is equal to ut plus half at square, where you have initial velocity, that is u is equal to 0. U is equal to 0. So just put the value of u in this equation. So आप जैसे ही u का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका है, half at square. Okay, so u is equal to 0, so 0 plus half at square, your half at square. So now we have numbered this equation as 1 and this equation as 2. Okay, so अभी क्या करेंगे हम, देखिए f इज इक्वल टू a में है, ठीक है, and s is equal to half at square है. Okay, now what we will do is the value of f and value of s we will put in this equation. Okay, तो ये जो वैल्यू आपका f और s का वैल्यू जो आया है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में, ये इक्वेशन का वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप करेंगे. f के बदले क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे, और s के बदले क्या लिखेंगे, हाफ at स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, now see what I did is using equation 1 and equation 2, I have put the value of f as ma and the value of s as half at square. Okay, now what I am doing, see, now here you have half, ठीक है, तो आप हाफ को यहाँ लिख लीजिए, फिर आप m लिख लीजिए, और आप देखिए यहाँ पे a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, so a multiplied by a will become what, a square, isn't it, and you have t square as well. So now what you can do is, देखिए इसको हम एक साथ ब्रैकेट में होल स्क्वायर करके ले सकते हैं, है ना. So what, here a square and here t square, so if you take the thing into bracket, so we can put up that square, isn't it. So this becomes your w is equal to half m at whole square. So this is your third equation. This is your थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था, f इज इक्वल टू एम ए. सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका, s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, हाफ m एटी स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, now see what I am doing. Now again I am using Newton's first equation of motion. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ऑलरेडी आपको अभी वो जो रेड पेन से लिख के दिखाया था. सो फर्स्ट इक्वेशन वाज व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके, v इज इक्वल टू u प्लस
80. Now you already know it is 0, isn't it? So V will be your 80. V becomes your 80. Now this can be put up in your third equation if this is 80 whole square, isn't it? So आपका third equation क्या था? W is equal to half m 80 square था, isn't it? So यदि आप इसको 80 square करोगे तो आपको 80 square के against में आपको V मिल जाएगा. Okay, so what we will do here is we will square this, squaring both sides, squaring both sides. So as you are squaring both the sides, you get V square is equal to 80 square. V square is equal to 80 square. So mark this as equation 4. So now what you will do, you will just take up equation 3 and equation 4. So put V square is equal to KAT square in equation 3. So just take equation 3, that is W is equal to half MAT square. So you have taken W is equal to half MAT square. Now instead of this 80 square, you can write down that is half MV square. हाफ एम वी स्क्वायर. सो यू कैन रिप्लेस दिट 80 स्क्वायर. आप ये 80 स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? वी स्क्वायर के साथ. सो यू गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. So ultimately you are getting W is equal to half mv square. Now you know that kinetic energy is equal to work done. पहले ही हमने देखा था ये चीज. So you can replace work done, that is W, by half mv square, isn't it? So the expression for kinetic energy is half mv square. तो जब भी आपको kinetic energy किसी ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए कहेंगे तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. ठीक है. So we have derived this expression from the Newton's second law of motion. So हमने क्या किया था? पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ F इज इक्वल टू एम ए को कंसिडर किया था. बाद में हमने क्या किया था? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर किया था, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देन व्हाट वी डिड इज वी हैव रिप्लेस्ड दिस इक्वेशंस and ultimately we have come for this expression of kinetic energy, that is half mv square. Now you can see that this thing is explained here. यहाँ पे सेम चीज एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मैंने अपने इसमें भी बोर्ड में भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, देखिए v इज इक्वल टू 80, यहाँ आपको लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो वो मैंने आपको बोर्ड में दिखाया है. ठीक है. सो अल्टीमेटली वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज half mv square. So this is how you can derive the expression of kinetic energy from the second law of motion, isn't it? So let us see the example over here. यहाँ पे देखिए एक example दिया है जिसमें आपको kinetic energy निकालना है एक object का. So stone is there, a stone having a mass of 250 gram is falling from a height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? Now you can see here that mass m is already there, then velocity is given to you. Okay, so here the velocity that is given is 2 meter per second and mass is given as 250 grams. So here you need to convert this gram into kg. So as you can convert gram into kg by dividing with 1000, so you get
0.25 kg, and you can easily put up this value in the expressions. So half into 0.25 multiplied by 2, that is v square, so 2 square, so it will give you zero point 0.5 joule as your kinetic energy. So we have already finished off with kinetic energy. So just I will give you a short uh, explanation again of kinetic energy. So kinetic energy is one of the mechanical energy, one form of mechanical energy, and kinetic energy is an energy that a body possesses when it is in motion, and the unit of kinetic energy is equal to the unit of energy, that is in SI system it is joule, and in CGS system it is erg. The expression of kinetic energy is half mv square. Now we will learn about potential energy. So potential energy is also another form of mechanical energy, and the definition of potential energy is the energy that is stored in an object because of its specific state or position. So you can see the definition of potential energy, that is the energy stored in an object because of its specific state or position. So potential energy is the energy that is stored in every object. सब ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे नेचर में है उन सब में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. तो यदि एक ऑब्जेक्ट आपका मूविंग नहीं है, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, then also it has the energy that is called as the potential energy. Now we will also find out the expression for potential energy. Now again we need to derive the expression for potential energy with the formula already known to you. So again W is equal to Fs. ये formula से हमको potential energy का expression derive करना है. So now again you need to just see what you have to suppose. So you again have an object M. So you have an object M, that is a ball. See, its mass is M. Then you have the force acting on it, that is F. And you have the height of this object, which is kept at h above the surface, अर्थ सरफेस. ओके, सो आप जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे तभी आप देख पा रहे हो कि जी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पोजीशन में है. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू सी द मास. हमको मास देखना है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, which is what is the height of that object, whether it is placed above the table, whether it is placed in the on the ground, or where it is placed. Okay, so depending upon is its placement, the height is taken as h. तो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसका हाइट हम लेंगे h, and mass you know it is m. And then we need to go for the force. So potential energy में क्या होगा, आप force आप नहीं दोगे, ये force already the gravitational force is acting on this. ये जो gravitational force है, gravitational force that is acting on this object. Okay, gravitation force. So you have F is equal to mass into the gravitational force, that is force of gravity. So F will be your mg. Okay, so you can replace these values in this expression. So आपको पता हो गया अभी F क्या होता है. F is nothing but it is mg.
and S is your H, isn't it? H is S is your displacement. Displacement मतलब आपका वो place किधर है वो object का. So whether it is kept in height or whether it is moving, anything, so that is your displacement. So here the S will be your H, isn't it? So just replace this values. So now see, I have written, since F is equal to mg and S is equal to h, therefore W is equal to mgh, and W is nothing but again the energy, and this can be replaced as potential energy is mgh. So expression for potential energy is mgh. So आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो आप ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. ओके, so you got both the expression of your kinetic energy as well as the potential energy, and these both the energies are mechanical energy. So please remember these expressions. So kinetic energy is equal to half mv square and potential energy is equal to mgh. Okay, so these two expressions has been derived from your original expression, that is work done is equal to force into displacement. Okay, so whenever you need to calculate the kinetic energy or potential energy, you can easily use these two expressions. Now you can see that in your textbook also the same thing is given, and you have a question that is numerical, that is based on your potential energy expression. Now you have 500 kilograms of water is stored in overhead tank of 10-meter high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. So you have been given with the mass, you have been given with the height, and you know that the gravity is 9.8 meter per second. So you can just put the values in the expression, that is potential energy is equal to mgh. तो mass आपका already दिया हुआ है 500 kg, so put mass as your 500. Then you have been given with g, that is 9.8. it is universally accepted. ये 9.3 क्या है, ये 9.8 meter per second is your gravity, that is this is constant, isn't it? ये constant है. So you have to just multiply this g 9.8 and height is your 10. So 500 into 9.8 into 10. So mass is 500, g is 9.8 and height is 10. Okay, so as you calculate, you get 49,000 joule as your potential energy. So again the unit is joule because energy's unit is joule, and in CGS system it is erg. Okay, so we have easily found out the value for potential energy. Now we have to go for the next topic, that is transformation of energy. Now our next topic is transformation of energy. That means that the energy is transferred from one form to another form. And why it is so? Because as it is transformed from one form to another form, it will be easily useful. Each form is useful to the human kind. Okay, so as you can see, the chart is given in your book. Now you can see a flow chart that is given in your book, where you have got the different forms of energy, that is mechanical energy, electrical energy, heat energy, sound energy, chemical energy, light energy. Okay, so you have been given with a chart of these all energies, and you can see that the arrows are given here. So you can see that the energy forms are
transformed from one kind to another kind, and again it comes to the other energy. Okay, and all these energies are useful to us. So you can see here it is written energy can be transformed from one type to another type. So in nature, we don't know from where energy is coming and where energy is going. So we can only say that energy can be transferred from one form to another form. हमें पता ही नहीं है एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, पता ही नहीं है. बट वी ओनली नो दैट द energy is transformed from one form to another form. So in this chart you can see that the mechanical energy मतलब जो मशीन की एनर्जी है उससे क्या हो रहा है, वो एनर्जी से machine and mechanical energy is present in the generator. Okay, so as you know that generator is using mechanical energy, and after using the mechanical energy it gets transformed, it generates what, electrical energy. तो mechanical energy use करके generator electrical energy produce करता है, isn't it? And then again this electrical energy is needed by the generator to get it charged, isn't it? तो चार्ज करने के लिए फिर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है, isn't it? So again this electrical energy is transformed into the mechanical energy. Okay, so similarly when electrical energy is used for हीटर के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो इट गिव्स यू हीट, गर्म पानी आपको देता है. ठीक है, फिर क्या होता है, गर्म जो चीज़ है थर्मल प्लांट में जब है तो हम लोग वो कोल वगैरह देके उसको गर्म करते हैं तो हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलता है. सो देख पा रहे हैं आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी, एंड देन हीट एनर्जी का एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम electrical energy. Now as you know about the loudspeaker, so as you give electrical energy to the loudspeaker it will give you what, sound energy, isn't it? Now when sound energy is used for microphone it will give you a electrical energy. Now here also you can say that when electrical energy that is used by the electrical lamp, isn't it, that thing is giving you the light energy. Now again if you want to see, just see there, this generator is there, generator is using mechanical energy to give you electrical energy. Okay, now the fan is using electrical energy. फैन जो है आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो वो आपको हवा देता है, तो दैट इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी. इसका जो फैन जो है उसका मशीन चलना शुरू होता है. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन टू द फैन सो दैट इट विल गिव यू द मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, इतना क्लियर है आपको. फिर आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी if it is given to the heater it will give you heat energy, that is the heater gives you the hot water, isn't it? Now heat energy when given like आप यदि थर्मल पावर स्टेशन में जैसे, नहीं तो स्टीम इंजन में आप देख पाते हो कि हम क्या करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, कोयला, इजंट इट, कोयला को क्या करते हैं हम लोग, उसको गरम करते हैं ना. गरम करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो थर्माकपल विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी. सो देखा आपने हीट एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी और हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. ठीक है, फिर आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यदि लाउड स्पीकर में डालते हैं तो दिस गिव्स यू द साउंड, इजंट इट. नाउ एज माइक्रोफोन जो माइक रहता है उसमें भी हम जब साउंड एनर्जी डालते हैं तो आपको
वो आपको स्पीकर में वो बजता रहता है, तो दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजंट इट? देन हियर ऑल्सो इफ यू हैव द बैटरीज, जो सेल्स रहते हैं उसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर रहते हैं। तो वो जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं टॉर्च वगैरह, तो वो क्या करता है, आपको टॉर्च वगैरह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, जैसे कि लाइट वगैरह मिल जाता है। देन ऑल्सो यू कैन गेट द लाइट एनर्जी एज वेल, इजंट इट? So, like this, one form of energy is converted into another form of energy, and you have to use the different appliances for conversion or transformation of energy from one form to another form. Now you have the most important definition, that is the law of conservation of energy. So here it is said that energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be converted from one form into another form. The total energy in the universe remains the same. So law of conservation of energy is very important, where it tells you that energy can neither be created, energy को बनाया भी नहीं जा सकता और energy को destroy भी नहीं किया जाता है. It can be transformed from one form to another form. मतलब energy को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको क्रिएट भी नहीं, एक्स्ट्रा क्रिएट भी नहीं कर सकते और एक्स्ट्रा डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम. So whatever energy is present in your universe, that energy remains same, only it is transferred from one form to another form. So be thorough with this law of conservation of energy. तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमेशा पूछते हैं कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो बी थरो विद दिस स्टेटमेंट. Now in this activity you can see that two nuts or the pendulum, you can say, they are hanging, isn't it? So you can see that if one pendulum is given the force, so it will start swinging and it will strike the other pendulum, and this other one will also start swinging. Thus you can see that the energy whatever is present in the first pendulum is transferred to the second pendulum. Okay, so this shows you that energy is present in our universe. Now the next topic and very important topic of this chapter is free fall. सो फ्री फॉल, ये वर्ड से ही आपको समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. फ्री फॉल मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट विदाउट एनी हिंड्रेंस टू द ग्राउंड. कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप कोई भी हाइट से ऊपर से नीचे फेंकोगे और विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब किधर भी वो उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, डायरेक्टली वो ग्राउंड में आके गिरेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल. सो देयर शुड नॉट बी एनी hindrance when there is the object is falling from a height. Okay, and when it is you know that always the object, whenever it falls towards ground. Why? Because of the gravitational force that is present in our ground, isn't it? So हमेशा कोई भी चीज गिरता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है because of force of gravity, isn't it? You will see how we can calculate the energy. We can calculate the energy of the object when it is falling from a height. ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है. सो हम ये डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम देखेंगे कि कैसे टोटल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द
same, or total energy of the object remains the same. Now you can see here that if we release an object from a height, it gets pulled towards the earth because of the gravitational force. So this is very clear to you that whenever an object is falling from a height, it is always attracted towards its gravitational force. And object falling solely under the influence of gravitational force is said to be free fall or be falling freely. So there should not be any blockage, but the object should fall under the influence of gravitational force. Let us look at the kinetic and potential energy of the object of mass falling freely from height when the object is at different height. So as you know that we want to see whether the total energy remains the same, we need to calculate the kinetic energy and potential energy of the object. So So let us see how we can find out. Okay, so now you can see the figure here. यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट. ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं इसमें क्या लिखा है. सो द पॉइंट ए इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड and point B at a distance x vertically below A. Let the point C be on the ground directly below A and B. Let us calculate the energy of the object at A, B and C. So मैं आपको easy करके बताती हूँ कि क्या इसमें mention किया है. Now see, I have drawn a line. Now if a ball is kept here, आप एक बॉल लीजिए और बॉल को आपने एक पोजीशन में रखा है. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बॉल क्या होगा, ये बॉल को जब वो नीचे गिरने लगेगा तो वो कैसे नीचे जाएगा, देखिए ऐसे फुल यहाँ पे, और ये जो सी है ये ग्राउंड है, तो बॉल आपके ऊपर से आपका नीचे आ जाएगा और उसके बीच में वो ये पॉइंट में भी आएगा, isn't it? The ball will start falling from this height, it will reach this side and ultimately it will reach to the ground. ठीक है, so let us imagine कि एक बॉल रखा हुआ है, अभी उसको वो गिर रहा है नीचे की तरफ, it is falling, okay, towards the gravity, towards the ground. So as you can see that ball is going through all these points. So let us calculate what is the energy in this ball. So now you can see that ये जो full height है, मतलब यहाँ से यहाँ जब बॉल गिरता है तो ये उसका हाइट है, टोटल हाइट. ठीक है, यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से सी पॉइंट तक उसका क्या हो गया, total height is h. Now from A point to B point the height is x and from B point to C point the height will be h minus x. ये समझ में आ रहा है आपको? सपोज ये h यदि आपका 10 रहा, h इज आपका 10 है और x यदि आपका 4 है, ठीक है, तो ये वाला B2C क्या होगा, B2C क्या होगा, 10 minus 4, so h minus x, isn't it? So that is only we have taken the alphabets for mentioning it, okay. So as values are not given, we have taken this h and x. So now you can see that the height, total height is h. So when it is, this ball is falling from A point to, as it comes to B point, the height becomes x, and as it is in the point, at the point B, the height becomes h minus x. Okay, so we will just start how the ball is falling from the height to the ground and what are the different energies it is possessing. Okay,
Now we have taken the first case as when the object is stationary at point A. Its initial velocity is u. So as you know that this ball is kept at the position A. ये बॉल को हमने पोजीशन A में रख दिया, ठीक है. तो you know that here the velocity मतलब ये तो स्टेशनरी पोजीशन में है, इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग. सो यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी एज u इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसका पहले क्या मोशन क्या है, कुछ भी मोशन नहीं है, इसीलिए इसका वेलोसिटी क्या हो गया आपका ज़ीरो, है ना. इसका वेलोसिटी इज ज़ीरो. सो लेट अस फर्स्ट टेक द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर. तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए. सो काइनेटिक एनर्जी इज half mass into velocity square, isn't it? This was the expression for kinetic energy. Okay, now here what happens, here v velocity तो यहाँ है नहीं, क्या है ये, initial velocity u है. So we will change this into half m u square. Okay, half m u square. Now what happened, here u is 0, so just put up the value of u. So as it is 0, so the kinetic energy is 0. Okay, so kinetic energy becomes 0. Now what about potential energy? Now potential energy means the energy that is possessed by the ball. Potential energy क्या होगा, तो बॉल में जो ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी है. सो यू नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सप्रेशन इज mgh, isn't it? Now you need to find out the total energy at this position. टोटल एनर्जी आपका ये पोजीशन में बॉल का क्या एनर्जी है वो आपको देखना है. टोटल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है. सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh. सो व्हेन द बॉल इज एट द पोजीशन A, when the object is stationary at A and its initial velocity is 0, then its total energy is mgh. So total energy कितना हो गया यहाँ पे, mgh. Okay, so let us put this as equation 1. तो फर्स्ट जब बॉल इज इन एट ए पोजिशन, योर टोटल एनर्जी इज mgh. Okay, now let us go for as the ball now starts falling. अभी क्या हो रहा है, बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ है, ठीक है. Okay, now see the second condition here. Now as you know that ball is falling down. तो अब देखिए बॉल अभी कहाँ कौन से पोजीशन में आ गया है, बी पोजीशन में, ठीक है. तो एज इट हैज़ कम टू द पोजीशन बी, दैट मीन्स इट हैज़ अटेन्ड सम वेलोसिटी. इसमें कोई तो एक वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेस हुआ है ऊपर से नीचे की पॉइंट में. सो द वेलोसिटी इज टेकन एज v. सो नाउ द इनिशियल वेलोसिटी वॉज ज़ीरो बिकॉज उसमें कोई भी मोशन नहीं था. लेकिन अब जो बॉल ऊपर ए पोजीशन से बी पोजीशन में गिरा है, इसका मतलब इसमें कोई मोशन है, इसीलिए इट हैज़ वेलोसिटी v. एंड सिंस इट इज़ एट b पॉइंट, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन vb. Okay, now from A position to B position, how much distance it has covered, it has covered x distance, isn't it? So now we can again calculate the energies. So for calculating the energy, we have to first use the third equation of motion. Okay, so you have the third equation of motion as v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है. तो यहाँ पे व्हाट यू हैव, यू नो दैट u इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट यू हैड ऑलरेडी नोन. एंड व्हाट अबाउट v, v इज इक्वल टू vb, v इज इक्वल टू vb. एंड s इज इक्वल टू x. ओके, s इज इक्वल टू x. एंड a इज नथिंग बट इट इज g. A is nothing but g, that is gravity.
Okay, so just put up these things here, put up these values. So v is nothing but vb square is equal to u is 0, 2, a means g, and s means x, isn't it? So this will become your 2gx. So now you can calculate your kinetic energy and potential energy. So kinetic energy का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम लिखिए और वी स्क्वायर देखिए ये वाला, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 2gx. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाता है और यू आर गेटिंग kinetic energy is equal to mgx, isn't it? So now let us go for the potential energy. Let us go for the potential energy. Now potential energy, the formula is mgh, isn't it? Now here you have m g. Now height. height अभी देखिए बॉल यहाँ पे है, तभी वो ग्राउंड से कितने हाइट में है, ग्राउंड से उसका हाइट कितना है देखिए h माइनस एक्स. सो जस्ट रिप्लेस h with h माइनस एक्स. नाउ गो फॉर द कैलकुलेशंस. ऐसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो है ना. सो यू हैव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स. नाउ टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy plus potential energy, isn't it? So kinetic energy what you have found, mgx है ना, अभी अभी हमने kinetic energy निकाला था mgx, और यहाँ का क्या है mgh minus mgx, potential energy जो निकाला है. अब you can see here this plus and minus get cancel off and the total energy remains as mgh. So this is your second equation. This is your second equation for second case. Now we will go for the third case. Now see the third case. Now the ball has occupied the position here. पहले B position में था, अभी बॉल क्या हो गया है, वो ग्राउंड में गिर चुका है. ओके, ग्राउंड में आ चुका है. सो इट हैज फॉलन to the ground. Okay, so as it has fallen to the ground, so you can again see the height is total height. height जो है मतलब कहाँ से गिरा है, वो A पोजीशन से C पोजीशन में गिरा है अभी, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना. और फिर क्योंकि मोशन में है ना, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा. और a फिर से क्या हो जाएगा, g हो जाएगा. एंड द इनिशियल वेलोसिटी वाज u, दैट वाज ऑलरेडी 0. सो अगेन वी विल टेक द third equation of motion. So again you can see third equation of motion was v square is equal to u square plus 2as, है ना. ये था आपका. तो अभी v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, vc हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी c में है. देखिए मैंने यहाँ लिखा है vc हो जाएगा. u स्क्वायर तो पहले जो था वो तो 0 ही था आपका, और फिर 2a इज इक्वल टू g, एंड हाइट कहाँ से कहाँ तक, फुल हाइट इज h, isn't it? So this will be like this. सो आपको ये रेड बॉल दिखाई दे रहा है ना, अभी ये बी पोजीशन से सी पोजीशन में गिर गया है, दैट मीन्स इट इज़ इन द ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ. तो ये ग्राउंड में ही आ गया है. तो हाइट कहाँ से गिरा है, एच, देन टूवर्ड्स योर ग्रेविटी, isn't it? And initial energy, that is your velocity, was 0. So you got velocity at point C as 2gh. Okay, 2gh. Now let us calculate the kinetic energy. Kinetic energy क्या है, half mv square. So just put the values, half m
और v का स्क्वायर क्या हो गया 2gh स्क्वायर। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर 2gh। यहाँ पे देखिए वी सी स्क्वायर इज नथिंग बट 2gh। Now just cancel off 2 here, so you again get kinetic energy as mgh. Okay, now go for the calculation of potential energy. So again the expression for potential energy is mgh. Now यहाँ पे अब देखिए ये बॉल यहाँ पर है, तो अभी ये कोई हाइट में है क्या ग्राउंड के लेवल से? नहीं। So here the height becomes your 0. So as you can see that, so here you can write h is equal to 0. Why h is equal to 0? Because here it is lying on the ground, so it is not at a height from above from the ground. तो ये ग्राउंड के ऊपर कोई भी सरफेस पे नहीं है, इसीलिए हम इसका हाइट 0 लेंगे. So now just put up your values mg into 0, so it will give you ultimately 0. So potential energy is 0. Therefore total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy you got as mgh and potential energy as 0. So again total energy is mgh. This is your third equation. This is your third equation. Now as you know that the ball has fallen from point A to C, now you can easily compare between the total energy at 3 positions. Now total energy in the first A position was how much? It was your mgh. देखिए मैंने फर्स्ट करके मैंने इक्वेशन नंबर दिया था, तो फर्स्ट इक्वेशन वाज mgh, देन टोटल एनर्जी फॉर सेकेंड इक्वेशन वाज mgh and total energy for third equation is also mgh. So this was your first equation, this was your second, and this was your third equation. Okay, now from equation 1, 2 and 3 we can see that total energy of object is same at 3 points A, B and C. So as you can see that we have calculated the total energy at positions A, B and C, and we got the conclusion that at each point the total energy remains the same. Now from this what we have concluded is every object has potential energy at an height when it is at the height above the ground, and it keeps getting converted into kinetic energy as the object falls towards the ground. On reaching the ground, all the potential energy is converted into kinetic energy. So at a point during the fall, the total energy remains the constant. So at point A you get mgh, that is the potential energy is the total energy is mgh. Total energy at point B also mgh, and total energy at C is also mgh. That means this shows that energy gets converted, that is it gets transformed from one form to another form, isn't it? So it neither get destroyed nor get created. Okay, so it can be converted from one form to another form.
तो आप देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको ये फ्री फॉल का जो आपका एक्सप्रेशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दिस comes in your exam that show that the total energy of free fall of an object remains the same. Okay, so this question always comes in your exam, so be prepared for this question. I have already explained you one by one, so please go through that explanation and try to uh, understand what it has been explained. Okay, so with this, we complete off with our topic energy, where we have all learnt about the definition of energy, its unit, the different forms of mechanical energy, that is potential energy, kinetic energy. We have also talked about the transformation of energy. We have also learnt about law of conservation of motion, and we have also gone through the free fall of an object, where the object possesses the energy as potential energy, and when it comes towards the ground, the potential energy gets converted into kinetic energy. So in all, the total energy remains the same. So up to this we have completed, so please go through your textbook properly, try to understand whatever have been explained to you. So in our next video we will go for the next topic, that is power, and we will also do some numerical problems along with the topic power. Thank you.